All right, good morning, everyone. So, today the topic which we are going to start is subject verb agreement. We'll start this topic today. So, you have been doing it since your class third or fourth, and this is just the repetition of what you have already learned, plus a few more rules are added in it according to your class. So, the first is that the verb agrees with its subject in number and persons. So हम जब subject verb agreement की बात करते हैं, then what comes in our mind that the verb in a sentence should agree with the subject. Means if our subject is plural, then our verb should be according to the plural subject, and if our verb is singular, then it should our verb sorry if our subject is singular, then our verb should be according to the singular subject. So examples are there in front of you. The bird flies. Now here bird is singular, subject is singular. So the verb here is flies. But when we changed our subject to plural, the birds, then the verb also changed according to our subject, that is plural birds. So our verb became fly. So, subject verb agreement is the topic in which we consider that the verb in a sentence should agree with its subject in number or person. Now, second rule is two or more singular subjects joined by and usually take a verb in the plural. हम किसी सेंटेंस में जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को and के साथ ज्वाइन कर देते हैं, तब हम वर्ब कौन सा यूज करते हैं? प्लूरल. नाउ have a look at an example. Raman and Harry. Now Raman is a singular subject and Harry is another person, but we have joined these two subjects using and. So our verb in a sentence will be according to our subject, that is plural now, Raman and Harry. In this sentence, our subject is Raman and Harry. Now this has become our plural subject because we have joined the singular subjects with conjunction and. So Raman and Harry work hard. Next example is iron and coal are found in India, because our subject here is iron and coal, sorry, and we have joined these two nouns using and. So हमारा subject बन गया iron and coal. तो हमारा verb क्या आएगा? Are. That will be plural. Now, in the third example, you can see there are a cow and an ox in the field. हमने आर क्यों यूज किया? बिकॉज देर आर टू एनिमल्स, एक काउ है एंड एन ऑक्स इज देयर इन द फील्ड. सो इसलिए हमारा वर्ब जो आया प्लूरल आया, बिकॉज देर आर टू एनिमल्स इन द फील्ड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज 2.1, because again it is with the singular subject conveying one idea. But if two nouns suggest only one idea, in our sentence, we have two nouns, but those two nouns refer to one idea or they refer to the same person or thing. The verb must be singular. You can understand this better through example. First, we'll have a look at second example, bread and butter. Now, here in this sentence, there are two nouns, bread and butter, but they both refer to one idea, that is wholesome food. दोनों मिलके किस आइडिया की बात कर रहे हैं? फूड की बात कर रहे हैं. चाहे हमने ब्रेड एंड बटर को कंजंक्शन एंड के साथ ज्वाइन किया है, but these both nouns are referring to one idea, that is wholesome food. इसलिए the verb used here will be singular. Bread and butter is a wholesome food. When two nouns joined with and refer to one idea or same person or thing, तो हमारा verb क्या होता है? Singular. Slow and steady wins the race. Now
Have a look at the third example. My friend and lawyer has come. अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? मेरा फ्रेंड जो कि लॉयर है, लॉयर भी वही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन, वही पर्सन मेरा फ्रेंड है, वही पर्सन लॉयर है, इसलिए हमने वर्ब क्या यूज किया? सिंगुलर, क्योंकि ये दोनों फ्रेंड एंड लॉयर जो हैं वो एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड singular verb here, has. Next, coming to rule 2.2, that is, if two singular nouns joined by and are preceded by each and every, the verb is singular. अब हम बात कर रहे हैं दो नाउन्स की जो प्रिसीड करते हैं वर्ड्स ईच एंड एवरी के साथ, तो हम उनमें कौन सा वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर. हैव अ लुक एट द एग्जांपल. ईच डे एंड एवरी आर, इसमें नाउन्स क्या हैं? डे एंड आर. वेरी नाइस बेटे. हाँ जी बेटा, सो वी वर ऑन दिस रूल. If two singular nouns joined by and are preceded by each and every, the verb is singular. Example है हमारे पास, each day and every hour brings us a fresh anxiety. अब यहाँ पे हमारे पास nouns हैं day and hour, but they are preceded by the words each and, दोनों में हम ईच यूज कर रहे हैं इसमें, सो हमारा जो वर्ब है वो आएगा सिंगुलर. यहाँ पे आ जाएगा ब्रिंग्स, राइट. सेकेंड एग्जाम्पल इज एवरी मैन एंड एवरी वुमेन. मैन एंड वुमेन दोनों नाउन्स हैं, बट उनके आगे हमने क्या यूज किया है? एवरी वर्ड. इसलिए जो हमारा वर्ब है दैट विल बी सिंगुलर. एवरी मैन एंड एवरी वुमेन इन द विलेज was terrified. So this is our rule 2.2, that when two singular nouns are joined by and are preceded by each and every, in that case the verb used is singular. Next, coming to third rule, that is, words joined by with or as well as carry the verb according to the former subject. जब हम दो nouns को join करते हैं using the words with और as well as, तो उस केस में हम जो verb यूज करते हैं that is according to the former subject. former मतलब पहले वाला subject, राइट. एग्जाम्पल देखिए, द कैप्टन विद ऑल हिज मेन वॉज ड्राउन्ड. नाउ वी हैव joined captain, all his men using with, राइट. सो हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया? द कैप्टन विद ऑल हिज मेन. दिस इज आर सब्जेक्ट. बट इन दोनों में से वी आर लुकिंग फॉर द फॉर्मर सब्जेक्ट. फॉर्मर मतलब पहले वाला, एंड दैट इज कैप्टन. कैप्टन हमारे पास सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब क्या करेगा? अग्री करेगा इसके साथ. सो द कैप्टन विद ऑल हिज मेन वॉज ड्राउन्ड, राइट. सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, रमन एज वेल एज हैरी एंड जॉन डिजर्व्स प्रेज. why we have used deserves here? Because we have joined Raman, Harry and John using as well as. So हम बात कर रहे हैं कि एज वेल एज के साथ जब हम अपने सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं, इन दैट केस हम फॉर्मर सब्जेक्ट की बात करते हैं. फॉर्मर यहाँ पे रमन है, रमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारा वर्ब जो है डिजर्व्स, उसके अकॉर्डिंग यूज किया हमने, राइट. एंड देन थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द ब्रदर्स विद देयर सिस्टर. हमने ज्वाइन किया विद के साथ, द ब्रदर्स विद देयर सिस्टर्स. अब हमारा फॉर्मर सब्जेक्ट क्या है? ब्रदर्स. ब्रदर्स प्लूरल है हमारे पास, तो इसलिए हमने वर्ब क्या यूज किया? आर. सो द ब्रदर्स विद देयर सिस्टर आर वेरी हैप्पी. नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, द प्रेसिडेंट एज वेल एज, सॉरी, द फार्मर्स एज वेल एज द प्रेसिडेंट आर ऑन प्रोटेस्ट. नाउ फॉर्मर सब्जेक्ट इज फार्मर्स,
सो इसलिए हमारा वर्ब जो है अग्री किया फार्मर्स के साथ, इसलिए यहाँ पे आ गया आर. नेक्स्ट इज rule number 4, that is, when two or more subjects in the singular are joined by or, nor, either or, neither nor, the verb is put in the singular. हम बात कर रहे हैं जब हम सब्जेक्ट्स को दो या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं यूजिंग और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर. इन दैट केस जो हम वर्ब यूज करते हैं दैट इज सिंगुलर. नाउ हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स. जैक और टॉम इज टू ब्लेम. दोनों और मीन्स ऑप्शन, जैक या टॉम. सो दोनों में से एक की बात हो रही है. इन दैट केस आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड verb is here, right? Next is either Raman or Anil was absent. Either या तो रमन या अली, अगेन दोनों में से एक. अगेन आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड वर्ब was here. Neither Peter nor Harry was absent. ना तो पीटर ना हैरी. Again we are using singular verb. But note, have a important note here is, but if one of the subjects is in the plural. Now the examples which we have seen, in all these examples we had singular subjects. Now we are talking about when one of the subjects is in the plural, the verb must be in the plural. The plural subject is placed near the verb. Now, you need to keep this thing in your mind that the plural subject is always kept near the verb. Or example is the farmer or his servants. Now we are joining the nouns farmer and servants using or. तो हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक फार्मर है, एक उसके सर्वेंट्स हैं. वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड अनदर सब्जेक्ट इज प्लूरल. एक नाउन हमारे पास सिंगुलर है यहाँ पे, नॉट द सब्जेक्ट, नाउन. एक हमारे पास नाउन सिंगुलर है फार्मर, और एक हमारे पास प्लूरल है सर्वेंट्स, राइट? तो इस केस में व्हाट वी डू इज, जो प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट इज जो प्लूरल नाउन है, उसको हम हमेशा वर्ब के साथ प्लेस करते हैं. द फार्मर और हिज सर्वेंट्स वर कॉट. तो इन दैट केस जो आपका वर्ब आएगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, नीदर टॉम नॉर हिज फ्रेंड्स. अगेन टॉम इज सिंगुलर and friends is plural, and we have placed the plural subject with verb. So neither Tom nor his friends have come, right? Next is either the boy or his parents have done this. So अगर हम टू नाउन्स को ज्वाइन कर रहे हैं यूजिंग और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, in that case there are two conditions. The first condition is when we have both the subjects singular. Jack और Tom दोनों ही singular थे, तो हमारा verb use हुआ singular. But in case if we have one singular subject and one plural subject, in that case we always place the plural subject with the verb, and the verb is used according to the plural subject. I hope this is clear to you. Next, coming to rule number 5, when a plural noun comes between a singular subject and its verb, the verb is often wrongly made to agree with the nearest plural noun. We should guard against such an error and say, अब आपको let me make this point clear to you. We are saying when a plural noun comes between a singular subject and its verb. In this example, here the plural noun is houses, right? Houses is the plural noun and it is placed between the verb is and each one of, right? In that case,
व्हाट मिस्टेक द स्टूडेंट्स कमिट, वो हाउसेस को देख के आर यूज कर लेते हैं. But you need to keep in mind that when a plural subject is placed between a singular subject and the verb, then the verb is singular. Second example देखिए, a combination of colors charms the eye, not charm. Because हम किस चीज की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं. कॉम्बिनेशन किस चीज का, कलर्स का. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वॉज गुड. नाउ इन दिस सेंटेंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एप्पल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स. क्वालिटी की बात हो रही है, तो इसलिए द verb will be singular. If I change the sentence to the apples were good in taste, फिर हम वर यूज करेंगे क्योंकि वहां पे मैं एप्पल्स की बात कर रही हूं. बट इस सेंटेंस में आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी. नेक्स्ट इज रूल नंबर 6, दैट इज either, neither, each, every, one, many, a must be followed by a verb in the singular. Whenever you find these words in your sentence, either, neither, each, every, one, and many a, in that case, we have to use singular verb. Either of the two boys has done this. दोनों में से किसी एक लड़के ने ये किया है. Right? Neither of them was found guilty. Each of these boys, now when I say each of these boys, it means I am pointing out to the individual boy, is intelligent. Every one of the answers is wrong. Many a boy has not done his duty. So whenever you find these words in your sentence, there the verb should be singular. Now rule number 7 is, a collective noun like committee, assembly, jury may take a singular or plural verb. Now, whenever we use such words, committee, assembly, or jury, we always get confused whether to use singular verb or verb according to the plural subject. But it will depend upon the usage of the words. Kaise? If the collection is thought of as a whole, the verb is singular. अगर हम उस collection को, किसकी collection, committee is a collection of 4 or 5 people, राइट. ज्यूरी में भी 4-5 लोग होते हैं. अगर हम उस कलेक्शन को एज अ होल, एज अ वन यूनिट डील कर रहे हैं, इन दैट केस आवर सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर. सो एग्जांपल्स आर देयर. द कमिटी हैज डिसाइडेड दिस मींस all the members in that committee had the same opinion, so we are taking that as one unit. इसलिए हमने यूज किया verb has, singular के according. The jury has given its verdict. Jury ने अपना verdict दे दिया है. Now again the people had the same opinion. But if the individuals or members of the group are thought of separately, the verb is plural. Now it may happen that the people, they may not agree at one point, so they will have their different opinions. In that case we will treat them separately. तो उस केस में हम इन वर्ड्स के साथ, किन वर्ड्स के साथ, कमेटी, असेंबली और ज्यूरी के साथ प्लूरल नाउन यूज, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, सॉरी. So the jury were divided in their verdict. इस सेंटेंस में वी आर टेकिंग ऑल द पीपल डिफरेंटली. उनका अपना ओपिनियन है, सेपरेट हम उनको आइडेंटिटी कंसिडर कर रहे हैं. The committee were divided in their opinion. Again, the people in the committee had different opinions, so उनके लिए हमने plural verb use किया है. Next, coming to rule number 8, that is, when a plural noun is the name of one thing, say a book or a country, it takes a singular verb. जब हमारे पास किसी book का नाम है या किसी country का नाम है, उस केस में हम उसको एक singular verb उसमें use करते हैं. The Arabian Nights is an interesting book. The United States
has a big army, right? Next is rule number 9, when the subject of the verb is relative pronoun. Now you need to understand this point very clearly. When the subject of the verb is relative pronoun, the verb must be made to agree in number and person with the antecedent of the relative. This is taught to you when you join two sentences using relative pronoun also. So examples are there. I, who am your friend. Now here our subject is I. So verb must agree with I. That is why we have used am here. In second example, you, who are my friend. Again, subject is you and the verb must agree with our subject. So you के साथ we always use are. Now, third example is she is one of the bravest women that have ever lived. Now, here that is a relative pronoun and women is antecedent. So, our verb must agree with our subject. Subject हमारा women है, that is plural. So, हमारा verb must go according to this subject. Women plural है, so we'll use have here. He who is my friend should stand by me. Again, he is the subject और हमारा verb इसके साथ agree करना चाहिए. That is why we have used is. Next, rule number 10 is when a plural noun comes between a singular subject and its verb, the verb is often wrongly made to agree with the nearest plural noun. We should again guard. Again, this is the same slide, I guess. So each of these houses, right? Ye rule we have already discussed. Next, coming to rule number 11, that is when a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is generally singular. This you can understand with example. 1,000 rupees. इस सेंटेंस पे हम बात कर रहे हैं 1,000 रुपीज की, बट हम उसको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ले रहे हैं एज अ होल. उस स्पेसिफिक क्वांटिटी को हम एज वन यूनिट एज अ होल कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए आवर वर्ब विल बी सिंगुलर. इसलिए हम यहाँ पे इज यूज करेंगे. इज अ गुड अमाउंट. आर यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम 1,000 रुपीज को एज अ होल कंसिडर कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2/3 of the city is ruined. We are taking this 2/3 as a whole. इसलिए we have used the verb is here. I hope this concept of subject verb agreement is clear to everyone.